नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आपको लेकर चलेंगे ग्लासगो सिटी ट्रेन से। अभी हम खड़े हैं एडिनबर्ग के सेंट्रल स्टेशन वेवरली स्टेशन पर और हमारी ट्रेन भी अब आ गई है। अब हम आपको ग्लासगो स्टेशन लेकर चलते हैं। This train is for Glasgow Queen Street High Line. The next station is Tiamat. Platform 2 for the 1419 ScotRail service to Alloa. अब हम ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अब हम आपको ग्लासगो सिटी दिखाएंगे और ये वही सिटी है जहां पर कि 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे। आइए। अब हम ग्लासगो रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और देखिए ये सिटी कितनी खूबसूरत है। चारों तरफ कितने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स और स्टैच्यूज़ हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत स्टेशन बाहर से।
आए हैं कि गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और जिसके बाहर एक स्टैचू है, और आप स्टैचू पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक कोन बनाया हुआ है। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि यहाँ की जो जनता है वो अपना विरोध प्रकट करने के लिए इस तरह के ट्रैफिक कोन्स जो है स्टैचूज पर पहना देती है। ये एक अजीब तरह का फनी आइडिया है। जैसा कि आपने देखा ग्लासगो सिटी भी कितना सुंदर है, तो आइए हम आपको कुछ फन फैक्ट्स बताते हैं ग्लासगो के बारे में। एक तो ग्लासगो के जो ट्रीज़ हैं वो डायनासोर से भी बहुत पुराने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि यहाँ की जो स्कॉच विस्की है जो कि बहुत फेमस है स्कॉटलैंड की, वो ग्लासगो में ही बनती है। और इसके साथ एक बात और कि विस्की के साथ जो आप लोग चिकन टिक्का मसाला खाते हैं वो भी सबसे पहले यही इन्वेंट हुआ था, ऐसा मुझे गूगल ने बताया है। आइए याद आया कि BBC स्कॉटलैंड का हेडक्वार्टर भी ग्लासगो में ही है, और ये है BBC स्कॉटिश सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा एट सिटी हॉल। तो इस ऑर्केस्ट्रा से मुझे याद आ रहा है कि यूनेस्को ने ग्लासगो को सिटी ऑफ म्यूजिक भी घोषित कर रखा है।
आज हमने आपको ग्लासगो सिटी दिखाई, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिटी कैसी लगी। और एक बात और कि आज ग्लासगो सिटी में घूमते हुए 2 घंटे से कम के सफ़र में ही मेरे 10,000 से ज़्यादा स्क्रैप हो चुके हैं। आप बताइए आप इस सारे दिन में कितना स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।